यार डिसअपॉइंटिंग। यार ये शो का वो है भाई, फॉर्मेट है। ये डिसअपॉइंटिंग है, ये अनुराग का काम बहुत डिसअपॉइंटिंग है, हैरी मगवायर जैसा। ये देख सुन, बाकी सब बात छोड़, ये देख बोल कर। Alissa, Alana, égua, faltou todo mundo, foi? Aline, Ana Yasmin, Ariane, Cecília, Cristiano Ronaldo, Emanuel. ओह, रिवाज से विवा रोनाल्डो। क्या बात है, क्या बात है। मगवार के क्या कहने, मैं जमाल गोटे मिलाया करो मैं। सो गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम। पोस्ट मैच रिएक्शन काफी टाइम बाद हम ऐसे खुश होके देंगे, ठीक है, बट काफी फ्लॉज है, बट काफी खुश है। वी आर जॉइंड बाय अनुराग एंड परितोष। सिद्धार्थ पंड्या वॉन्स आदित्य। लेट्स गो हैट्रिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक। आज जो मजा आया है, मजा किस बात का है? एक टीम शेरवुड का, ठीक है, दूसरा भाई जिम भाई भाई बैगलिन का। भाई भाई भाई, रुक नहीं जा नहीं, रुक जा, एक मिनट, मेरे को लेट मी बोलना वेंट भाई। आउट फर्स्ट। हाँ बोल ले भाई किस किस को शेरवुड का स्क्रीन से मेरे को दिख रहा था, धुआं निकलता हुआ ना कमरे तक आ रहा था एकदम। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिम बैगलिन की आवाज से सुनाई दे रहा था कि कितना जला पड़ा है भाई, अंदर से फूक गए वो लोग दोनों। भाई। मतलब मैच में वो बंदा बोल रहा है 150 कॉर्नर हो गए, हा हा, एक ही गोल मारा है, 151 हो गए, हा हा। साले ले, तेरी तेरी कॉर्नर टीम ने से विनर। लेस्टर तेरी टीम ने लेस्टर जितने प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं, तू 150 कॉर्नर के पीछे पड़ा है। कहाँ से आते हैं यार ये लोग? तो मजा है क्या, क्या इतना क्यों भर जाते हैं भाई? यूनाइटेड ब्रो। I just want we kick asses next season and title जीते 21st against everybody's expectations। उससे पहले इस बार चैंपियंस लीग जीते। फकिंग सही भाग क्रिस्टियानो जाएंगे भाई, रोनाल्डो, ये छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे ये क्रिस्टियानो सब। रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर कोई मेरे को बोलता है आर नॉट फेवरेट्स फॉर द नेक्स्ट मैच, आई डोंट अग्री विथ यू। यूनाइटेड एट होम विथ अ इक्वल लेवल टाई, जहां पर अवे गोल्स का कुछ नहीं है, दे स्टार्ट एज फेवरेट्स आफ्टर रोनाल्डो हैट्रिक। रोनाल्डो और कवानी का हक देखो आप, टेलेस का देखो आप, मगवार के ओवन गोल के बाद वो जो अब गया ना वापस, ओ माय गॉड। ये पता है उसका कारलांका का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि इट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड आर एक्चुअली डूइंग वेल फॉर द टीम दे आर। और वो बात सही है, हम भाई इतना बुरा खेल खेल के भी ना फोर्थ या फिफ्थ रह रहे हैं, बड़ी बात है। एक्चुअली वी डिड नॉट डोमिनेट एट ऑल एट टाइम्स। ऐसा लग रहा था कि वी क्या कर रहे क्या कर रहे। बट आई गेस 1 week's रेस्ट फॉर रोनाल्डो डिड वंडर्स। ही वाज एक्चुअली गुड, अपार्ट स्पेशली द फर्स्ट गोल। द फर्स्ट गोल वाज अनरियल। लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट गोल इज बेसिकली डायर, जो आराम से ऐसे खड़ा रह गया कि मैं क्या करूं। एंड ही वाज बेसिकली आस्किंग रोनाल्डो एंड लाइक गोडिंग कर रहा था कि भाई मारना मारना, औकात है तो मारना। हाँ एंड टॉप कॉर्नर लेके आया भाई। तो भाई ने मजा सेंसेशनल, लाइक दिला दिया। सेंसेशनल परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस वाज मुझे अ कंप्लीट स्ट्राइकर्स परफॉर्मेंस। Brilliant first goal, very good tap in for the second, and then a classic I am a more powerful player and I'll head the ball in directly into the net, power header kind of thing. क्या, मुझे लगा मच्छर उड़ा रहा है। लेट्स वेलकम मुदित on the show. Mudit, the same guy who has predicted a World Cup final goal for Harry Maguire, scores an own goal today. देख भाई कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ना, वो नहीं होता तो रोनाल्डो का गोल नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, ये मास्टर प्लान है भाई, रोनाल्डो की हैट्रिक को मोटिवेट करने के लिए मगवायर ने प्लान, own goal बनाया। you know Ronaldo cares about the numbers, don't forget. हाँ, करने दो, हर मैच में 3-3 मारे, क्या इशू है? सो रोनाल्डो इज अप टू 18 goals now at the age of 37। 18 goals, ठीक है। इफ ही प्लेज वेल,
द नेक्स्ट सीजन जब उसका पहला गोल गया ना, इट वाज 16th ऑफ द सीजन, ठीक है, एंड आई डिडंट वांट टू से इट आउट लाउड एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट आई हैड अ फीलिंग कि अगर ये ऐसा ही खेलता है ना द होल सीजन, रेस्ट ऑफ द जो भी 10-15 मैच बचे हैं डिपेंडिंग ऑन द चैंपियंस लीग टाइज, ही कुड एंड अप विद 30 गोल्स, In a मिनिमम season in which I 25. think completely possible, but मुदित भाई ने जब कल अपनी बात हुई थी तब उन्होंने बोला कि लाइक रेस्ट मिला होता और ग्रीनवुड होता तो क्या होता, मतलब इट वुड हैव बीन बेटर, तो वी कैन सी इट टुडे इटसेल्फ, राइट? अपनी कल ही बात हुई थी कि रेस्ट होता तो क्या होता। तो एक वीक का रेस्ट मिल गया, इफ ही गेट्स दैट रेस्ट आई थिंक ही कैन स्टिल डिलीवर। उसको yeah आई थिंक होपफुली अब कवानी रहे, बीच में इंटरनेशनल ब्रेक है आई नो, सो शायद वापस गायब हो जाएगा, बट होपफुली वो रहे तो आई थिंक वो रोटेट में अपने, लाइक वी कुड एक्चुअली बिल्ड ऑन दिस। दिस इज अ सेंसेशनल विन टू बी ऑनेस्ट, लाइक कमिंग बैक ट्वाइस इज ह्यूज। yeah एंड कवानी परितोष भाई एक कवानी फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, अगेन वो बंदा अपना क्लास दिखाया यार मेरे हिसाब से। एक जो वो थ्रू बॉल दे दिया था सेंचो को, अगर वो सेंचो थोड़ा सा भी एनर्जी बचा होता वो गोल था। और कवानी का जो पिच पे कवर कर रहा था, एज मच एज वी हेटेड हिम फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल, जब भी अवेलेबल होता है ही इम्प्रेसेस मी, Yeah, मी, he वो अपना when पार्ट he's on करता the है। pitch, it's 110, but the problem is he's not on the pitch regularly, so Ronaldo Yep. has to work a lot and the whole team has to do a little bit more, so वो issue है सर। आज के परफॉर्मेंस में एक बात बोलूं, फ्लॉज थे खूब सारे थे, बट आज थोड़ा फाइट एंड प्रोएक्टिवनेस दिखी टीम में। दे Exactly। वर ट्राइंग टू मेरे गेट टू हिसाब द से बॉल बिफोर द अदर प्लेयर्स और फाइट दिखा रहे थे। पॉगबा पॉगबा फकिंग एक नहीं 4-5 बार टैकल किया उसने भाई, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया क्या कर रहा है पॉगबा। यार मेरे हिसाब से तो एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस था, ठीक है, हम एक पेनल्टी दे दी, ठीक है, मिस्टेक्स थी अगेन, और मगवायर का ओन गोल आ गया। अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजेशन था, वी वर नॉट अफ्रेड टू सिट बैक ऑल्सो दिस टाइम। ऐसा नहीं था कि नहीं अटैक ही करो, वी वर प्लेइंग विथ अलर्टनेस की भाई अभी लगी पड़ी है, अच्छे से डिफेंड करो। मेरे को तो एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दिख रहा था कि एक टीम जो लीड को होल्ड ऑन कर सकती है, ठीक है, दो वियर्ड से गोल गए, बट अगर वो 1-0 भी होता, अपने इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत ही हुए इस टाइम, दिस वाज द परफॉर्मेंस वेर यू फील दैट इवन दिस टीम कैन डिफेंड अ 1-0 लीड, जो यूजुअली हुआ नहीं है, ठीक है, दो खाए हैं, आई नो दैट, बट दैट वाज द फीलिंग कि ऑर्गेनाइजेशन था टीम में। आई आई गेट थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से। मैटिच जब तक ही हैड द लेग्स था, मैटिच सेकंड हाफ पे लाइक ही स्टार्टेड टायरिंग डाउन एंड तब थोड़ा हम लोग, आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम हमारी टीम का जो मेरे को सबसे बड़ा लगा वो जो स्विच आ रहा था बेंटंकर का राइट विंग के, वो बहुत yeah अपने को परेशान कर रहा था। absolutely आई वो थिंक अ स्पेस लॉट नहीं ऑफ फाइंड पीपल, हाँ, और आई थिंक जस्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट फ्रेड, तो हाँ वो तो लाइक पर्सनली फॉर मी, इवन दो रोनाल्डो स्कोर्ड द हैट्रिक, इट वाज फ्रेड who ran the game, like number 8 पे he just killed it, just showed why you need a DM like Matic cover कर रहा था तो Fred was just playing that expansive football left right center सभी जगह पे, so it was a yeah sensational performance from him। आज वो यूट्यूब वाला पैकेज दिया जो शाख्तार डोनेट्स में हमको दिखाया था ना, कि जोसे मोरिन्यो बोलता था वी ऑल नीड अ ब्राजीलियन इन द टीम, ठीक है, तो वो वाला पैकेज दिखाया जो कि भाई थ्रू बॉल मार रहा है, जो फर्स्ट टच उसका हो रहा है, वरना वो फर्स्ट टच लेता है, सामने वाले को बॉल दे देता है, आ जाता है, ठीक है। बट देन लेट्स गो प्लेयर बाय प्लेयर, ठीक है, वी जनरली डोंट डू रेटिंग्स, बट आज रेटिंग्स कर देते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट्स स्टार्ट विद डेविड डगिया। 6.57। क्यों? 6। I think it was one of his off days today. काफी एवरेज गेम था यार। एक वो सॉन के पास बॉल थी, ही शुड हैव कलेक्टेड दैट इजीली, पता नहीं क्यों नहीं आया बंदा। पर आज मैं किसी पे हार्ड नहीं होना चाह रहा। आज बढ़िया है, आप सब बढ़िया खेले। I would also say DDG 6, 6। should have actually got to a couple of balls, like एक I think 2-2 ही था and then he just left, came up and then just stopped, so that Yeah. was the thing, and passing तो हमको पता ही है कि it's a issue for him at times, so I would say 6 as well, like he did पर not आज have to पासिंग do a थोड़ा lot। ठीक लगा मुझे। Yep, बट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक पे था नॉर्मल से। एक सेकंड हाफ में एक वो प्ले याद हो, हमारे पास बॉल था, वी वर अंडर प्रेशर, ठीक है, आगे से गलती हुई तो दहिया को पीछे बॉल खिलाया, दहिया के पास राइट साइड में शायद वरान ऑप्शन था या डलो पास था,
उसने डलो को Yeah. पास नहीं किया. He tried to play the ball up front रोनाल्डो तक. रोनाल्डो बीच में खड़ा है, सेंटर फॉरवर्ड अपने जो सेंटर सर्कल के थोड़ा सा आगे. राइट विंग वाला जो प्लेयर है मस्ट हैव बीन रैशफोर्ड, वो हाफ लाइन के पास खड़ा है. उसका बॉल दोनों के बिल्कुल बीच में गया. रोमेरो था या कौन था उसके पास में. तो इस टाइप की चीजें यार, मतलब आसपास तो गिरे ना प्लेयर के. और ऐसा भी नहीं था कि प्रेशर में था. आराम से या तो बॉल नहीं साइड वो में तो खिला सकता था लाइक या ऊपर. वी नो इट्स हिज प्रॉब्लम, सो आई गेस लाइक अब उसमें कैसा हाँ उसको ब्लेम वही. भी नहीं कर सकते, इट्स नॉट गुड एट इट. सो But बट या but 6. Paritosh bhai, Anurag is rated him above average. He has said 6.57. So what is the justification? I think 6 is the best score he can get. Yeah, I और दो think goals concede 6.5 किए. just for the reason that he dived at the right side of the penalty. And if it was not Harry Kane's special penalty, he would He have stopped probably it. would Like have it saved. was an Yes. unreal penalty taken. So I guess True, you should true. like give it to him. He's actually going the right side. वो भी नहीं जा रहा था last season. So दो save किए and he nearly did this if it was not a sensational penalty. So just give a 0.5, maybe more for that. I would give a 6 personally, but yeah, 6.5 is also fair to be honest. Fair enough. Fair enough. Let's talk about our right back, Diego Dallo. 7. 6.5. देखो, I gave him a 5. Reason, he was continuously being brought into the middle of the park instead of staying in position, and that left a lot of space for Sergio Reguilon. He should have held his position and stayed there and defended there because Reguilon was running rampant there. So I think But it was a Mudit bhai, tactical that problem. I हाँ, get that, but still he kind of should have balanced well between the two, which is why I'm giving him a 5. fair, fair. The आप 6.5 बोले. for me, I that is the thing that I agree as well, but I think that was more of a tactical thing from हम्म, our end. It was not his fault. I think he was told to do that. But yeah, he अच्छा. lost a man a lot of times, and I think वो he was getting like उसमें उसका भी fault नहीं था. Again, it was a tactical thing that Rashford and him were getting 3v2, and Yeah, because I think who's that guy, their midfielder, was kind of Blue. just dropping on the right on the left alongside Davies and Reguilon, and they were like combining over there, and those two did not have any idea as to what was happening. So I would say हम्म, 6.5 ish. For me also 6.5. Reasons are already mentioned. Uh, let's talk about our Captain, नहीं राइट सेंटर बैक. इस साइड से जा रहे हैं. राफेल वरान. 7. Nothing special. 7. Yeah, 7. Solid 7. 7. He 7. held I the would agree. he held the defense kind of. He managed it well. He Exactly. was vocal. He आज was हाँ, लग रहा था कि डिफेंसिव लाइन he में was. बुदित भाई, मतलब देयर वाज अ कॉम्पैक्टनेस. और वही जो आप बोलो ना, कम्युनिकेशन था. आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो एक साथ जा रहे थे, पूरी लाइन मूव कर रहे थे. तो दैट वाज वेरी Yeah, इंप्रेसिव देखने 7. में. Yeah, absolutely, होना absolutely. होना बेसिक चाहिए, बट अपनी टीम में देख के इंप्रेसिव लग रहा था. हाँ. Solid 7. That did nothing extraordinary, but was there at the right place, Was right solid. time. Like your defenders need to be 7. That is the thing. If it's your CB, he needs to be a 7. Does not need to be Yes. shown. Agreed. What about Harry Maguire? एक मिनट पहले डिसाइड कर लो. Are we comparing this to the performance in the derby or नहीं नहीं? Solo. नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. अगर उसमें कर रहे हो तो थोड़ा नहीं मुदित भाई बेटर आपका था. कट चुका है. रहने दो. Hmm. I would have given him a 6, but that own goal takes 1.5 out easily. Like he was good. Like at points he was good. Look, he was going well. He was taking Harry Kane out of the He game. had He good took him out a lot tackles of as well. times. Yeah, he हाँ, was tackles doing भी good. good. But then the own goal, like he was unlucky. I feel he was unlucky. He had a guy behind him. He had to put his foot in. He had no other option. But then you expect more from him. So I Yeah. would say 4.5 because of the own goal, specifically because of that one mistake that nearly cost us the game. Anurag. 5. मुदित भाई 5. I'll go with a 4. ठीक है. परितोष भाई went with 4.5. For me it was a 4 because that goal, that 2-2 goal could have made this hell, for us. A draw kicks us out of the top 4
whatever on paper यार hopes we have. हाँ, actually, अगर if this game ends draw, Maguire's rating drops. Ah, true, You true. would be But rating 0, हाँ, not even 4 and उस 5s. समय वो तो emotions में definitely. Who मतलब doesn't, Kunal bhai? Who doesn't? he's talking about Harry Potter, I guess. I don't hate Maguire. Look, I'll be very frank. I don't hate Maguire. I think he's good. It's just that he needs 3 weeks off. He needs to just go to not Greece for a couple of weeks so that he can calm his tits down. He can like get relaxed, get this देखो out of his परितोष system. भाई, तुम भी देखना नवंबर में जब मैं हंसूंगा इस पैनल पे. वर्ल्ड क्या कप यार, फाइनल गोल बाय हैरी मुदित भाई, मैग्वायर. सो जाओ, वो सो जाओ. वो आपकी दिसंबर उंगलियां में दर्द होगा. नहीं कर रही है, दिमाग दर्द कर रहा है. वो मुंगेरी, दिसंबर में वो दिसंबर में होगा. मुंगेरी मैं लाल, नवंबर की बात करूँ. मुंगेरी के लाल की हसीन जगह सपने. मुदित भाई का नाम डाल दो, मुदित भाई के हसीन सपने। मोदी भाई के हसीन सपने. क्या बात है, क्या बात है, आगे क्या बढ़ो रे, बात खाना खाना है. अरे है. वो टाइम पे कमेंटेटर बोला था, ठीक है, हैरी मैग्वायर सीजन गोज फ्रॉम बैड टू वर्स. It's worst to आई थिंक, worst. हाँ, वो समराइज कर रहा है कि इफ दिस वाजंट अ विन, इफ दिस वाजंट अ हैट्रिक बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलग होती चीजें, अलग होती चीजें बहुत. व्हाट अबाउट एलेक्स टेलेस? ही गेव अवे अ पेनल्टी. I think he was a lot of times I've seen not being close to the his man on the wings. उसकी साइड से बॉल आते ही जा रहे हैं, मतलब वहाँ पास होते ही जा रहे हैं, क्रॉस होते ही जा रहे हैं. बट स्टिल आई फेल्ट ओवरऑल he played well. एग्जैक्टली. बिकॉज उसका मुझे उसमें टैकलिंग कमिटमेंट अच्छा दिख था। रहा था भाई. मुझे कमिटमेंट दिख रहा था बंदे में कि ही इज कमिटेड टू द कॉज. भले ही हक दिया, ही हेल्ड हिज ओन एंड देन ही calmed himself down and tried to do whatever he could. I would give him a 6. सेम फॉर मी, 6। उसका आज मतलब बेशक वो पेनल्टी दिया, बट उस पेनल्टी में भी देखोगे तो एक्चुअल फॉल्ट लाइड विद सांचो, एंड साथ में शायद रोनाल्डो ही था। वहां पे आना नहीं चाहिए था। जो हम गेम खेल रहे थे आज, अपने विंग बैक्स ऊपर थे, वही जो इनसाइड चैनल्स में आने की कोशिश करते हैं, वहां से डलो मिडफील्ड में आ रहे हैं, यहाँ से टेलेस मिडफील्ड में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। उस पेनल्टी वाली मिस्टेक के लिए मतलब इतना मैं ब्लेम नहीं करूंगा। एंड ही वाज एक्चुअली डिसेंट इन टैकल्स एज वेल। बॉल विन के Ah, उसने। Kunal, हाँ actually he परितोष gave भाई। a cross yeah. जो फर्स्ट हाफ में सीधा रोनाल्डो के हेड पे था. हाँ. इवन ही प्रोवाइडेड एन असिस्ट फॉर द कॉर्नर. अब वो चीजें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. I would say I would give a 5. I am not with you guys on this. Too many times he was out of place, and especially वो मेरा problem वही था, वो बेंटंकर का एक cross and Teles was just standing. He had no idea what to do. Like they were just flying. वो क्या कुलुक नेक्स्ट क्या था, वो पागलों की तरह दौड़ रहा Kulusevski. था. उन दोनों का कुलुसेव्स्की, हाँ, कॉम्बो प्ले है ये, Yeah, they गोएन का। बहुत बहुत जा sharp रहा था. I signings mean, है ये. yeah, and you need your left back to be in position. This was like अगर यहाँ पे Luke Shaw होता and if he was playing that game, then I think he would have like a lot of things would have been shut down. Like बहुत बार अपना ऐसा था कि खुल जाते थे. We were lucky. Son I think had a shot that was the other side of the post. I think there were a couple of times which Kane could not just cross, like could not just chip it for the far post. A Hmm. lot of times, like with lot of chances from the left wing. I would give him a 5. Penalty, I don't blame him. Look, it was something that came back from a set piece, so we were not in And he shape. wasn't And even looking at. Sancho, yeah, Sancho nutmeg was bad. But again, look, he's partly to blame. You don't put your hands out. Like that's defending 101. You just don't. That is Yeah. wrong. But it was his whole defensive problem that I have an issue with, not the penalty itself. ऑन दैट बिफोर वी मूव फर्दर, जॉन मॉस ने पूरा ट्राई किया आज गेम सैबोटाज करने का। वी शुड हैव हैड दैट 100%. पेनल्टी। लिवरपूल मैन सिटी को वो पेनल्टी मिलती, 100%. 100% मिलती। डेफिनेटली, डेफिनेटली. फॉर मी टेलेस वाज a 6. असिस्ट है उसके नाम. ठीक है, अगर वो असिस्ट नहीं होता तो probably would have rated 5 or little below it, but I cannot rate him in the likes of Maguire because assist है. And penalty ठीक है, okay, it was a mistake. I don't want to put 100% on him, but yeah, for me an average score 6. I want to talk about our CDM now, Matic. What do you guys think? Very strong performance for me. He was, I mean, I physically, his presence was felt. I'd give him a 7 because, I mean, in the midfield, being outnumbered was not his fault. It's the players beside him, जिनका वो
वो गलती and his run and his dedication to the cause brought us to the second goal. I think he was partially to Sensational pass. yeah. So that's why I'll give him a 7. I will divide it into two halves. First half, 8.5. Unreal performance. Was screening Yeah. everything. Had I think two good blocks just on the box, and then Mm. plus that amazing pass for Sancho Yeah, I mean, if he to could create. do that for 90 minutes, Yeah, exactly. epic. Yeah, second Okay, half, yeah, I'll that's say what. 6.5. He was out of steam, and it happens. Like he's old. We know that. Mm, So, divided into two halves, I would, yeah, so it comes down to a solid 7. mm, Uh, mm, 8.5 for the first half because he was sensational. He completely took the game away from them. And that pass for the second goal, like एक ball में पूरा defense कट गया था, पूरा yeah, defense. Like yeah, Spurs were had no idea what happened, and that is what mm, you need from your CDM. Sensational performance mm, first half. yeah. 7.5 for me. फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया, कवर्ड इज मैनुअल, बॉल भी अच्छे डाल रहा था, स्प्रेइंग द बॉल्स फॉरवर्ड, और लिंकअप प्ले भी एक्चुअली अच्छा था। हम फर्स्ट हाफ में नॉट सिर्फ माटिच, हम सब ने क्विक पासेस और इंटरप्ले अच्छा दिखाया। तो आज तो वही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस था आज अपनी टीम के लिए। Exactly, Mm, exactly. We were balling at after the first goal actually. First yeah. goal के बाद the next 5 minutes we were absolutely balling. Like one touch passing was sensational. Absolutely. And I this comment really makes sense for me. Because of Matic, Fred was everywhere. Agreed. Yeah, Scott होता तो शायद ये possible नहीं होता. Mm, 100%. नहीं नहीं इसलिए फर्स्ट हाफ 8.5 बिकॉज ही वाज किलिंग इट ही वाज एब्सोल्युटली किलिंग अकेला बंदा पूरा स्क्रीन कर रहा था एंड दैट इज yeah. व्हाट यू नीड फ्रॉम योर सीडीएम So Kunal is asking, why are you wearing a Chelsea jersey, Paritosh bhai? So for me बिकॉज also, Matic was a 7.5. बिकॉज सपोर्ट करना है उनको इसलिए क्या उनके पास तो कोई होगा नहीं ना अब Nice, nice. What about Fred? पर्सनली Um, 9 I would give him 8.5. 8 here. I mean, Ronaldo का Fred मैं was पहले गोल का जो everywhere. flick था, it was very important. That flick was very important for Ronaldo to go and score the goal that he did. And with the ball also, he was pretty damn good. I mean, अच्छा खेला. Did everything possible. आई गिव हिम अ 9 simply because you don't see performances like this from a midfielder in Manchester United shirt, and you have not seen it for the past 3 years. So that is why he gets that extra 1.5. Sensational Mm, as a number 8. Under Rangnick, actually, he has been very good. And I think yeah. Rangnick, Yeah. with him and Scott playing as eights, have been sensational. So it kind of gives us an idea that both of them are not your Mm, holding midfielders, and we need that guy. But he was mm. balling. He finally showed, like you said, finally showed he was a Brazilian. Exactly. I was just going to say that. He finally showed us that samba magic in his feet. That Agreed. first goal ka pass, amazing. Like Ronaldo pura space mein tha and just one flick and he was there. All he had to do was shoot. But so yeah, And sensational. एंड इंस्पायर्ड पॉगबा कि भाई आप वन टच उल्टा लोगे तो अच्छा आप प्लेयर को बीट कर सकते हो. पॉगबा Mm, टुक अ टच जो इस साइड से, देन ही वेंट फॉर द शूट, जो शूट अच्छा नहीं था, mm, वेंट बिसाइड्स द पोस्ट, बट वो सिमिलर टाइप ऑफ जो फ्रेड ने किया था वैसा था कि यू बीट योर मैन लाइक दैट. सो फॉर मी इट वाज अ सॉलिड 8.5. व्हाट अ परफॉर्मेंस. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई डोंट हैव और उसने जो येलो लिया ना उसके लिए मैंने आधा पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है. डिसेंट का येलो लिया है, बहुत मजा आया मुझे. नीडेड. करो, मैं चढ़ो. वही तो बोल रहा हूँ मीत, ये चीजें जरूरी होती है, हमारी टीम करती नहीं है भाई। टैक्टिकल फाउल्स करो, दूसरी टीम के साथ फाइट करो, पता नहीं क्या बॉग डाउन होके बैठे रहते हैं। True, true, true. Let's talk about our third midfielder, Paul Pogba. अगर मतलब पॉल पॉगबा अच्छा खेलता होता ना, पिछले कुछ मैचों से बढ़िया खेलता आ रहा है और आज ये परफॉर्मेंस देता जो सेकंड हाफ के मिस्टेक्स की इन पर्टिकुलर, तो मैं ज़्यादा बुरी रेटिंग देता। बट क्योंकि वो यूजुअली से अच्छा खेला है आज, तो आई वुड गिव हिम 5.5। बोल दो Punit, परितोष. I मेरा would मेरा थोड़ा चलेगा. मेरा like first second half में divide कर रहा हूँ. First half was a solid 7.5. Was very good passing, pinging, everything he was doing.
Second half, I think he just ran out of steam. He could not cope up with He always the does that. fast. सिटी के सामने Yeah, I 15 think मिनट में थक गया था. आज थोड़ा it's बाल का it's a, वजन कम हो गया तो एक हाफ लास्ट किया वो. yeah, I agree, but I think it's his game is kind of that leisurely moving around the pitch. First half, I think he was very good, and he was one of the reasons that we were opening them up a lot of times. So I would say average 6.5. Second half में he did a lot of fouls, but then again जो goal third goal मारा उसमें वही था जिसने like he defended the ball, shielded it from like for like 10 whole seconds, turned around, found Sancho in a single ping, and that led to a corner and that led to a goal. So you have to give him credit for that because he was the only one there. Like Matic had already been substituted. It was Cavani there. So Yeah. he was the last guy, and it would have been a counter if he had not done that. So I would say, he needs to do it a little bit better. I expect far more from him, but yeah, solid 6.5 ish. Yes, Mudit. 5 for me. Second half काफी casual था. My issue with this guy is he's in and out game के बहुत बहुत है इसका. Variability बहुत है. He is not, I mean, completely in the game that he plays for 90 minutes. You know, he plays in patches. और वो patches में जब वो नहीं खेलता है, it harms us with goals. ऐसे ही harm नहीं करता. खाते हैं अपन उसमें goals because इसका composure या इसका presence उतना important नहीं हो पाता. ये इतना credit दे नहीं पाता टीम को जितना इससे expected है. And this has been a repetitive issue. I'm just glad he's going to go. But ठीक है. I think Sure. I agree with you on that. वो बेंटंकर का जो क्रॉस आ रहा था, which was isolating Telles. I think he should have done more. Like he should have gone Absolutely. there and helped Sancho and Telles. Absolutely, sir. For me, he was an average 6. कुछ टाइम अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाया, कुछ टाइम वही होल्ड अप प्ले से रिलीज नहीं किया. Apart from the people you have mentioned, Jaskaran says 5+1 for the new haircut. He is already trying to please Eric Ten Hag here for the new contract. No, I think he's shopping window. I just read someone's tweet that on fire Ronaldo and a shopping Pogba might just win us something, the Champions League this season. So yeah, so I think hopefully that works. Shopping वाला Pogba सबको दिखा रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ. Hopefully that works for us. So let's see. All right, let's talk about our wingers now. Marcus Rashford. Before anyone starts, I think this guy needs to be dropped and rested. अभी रियलाइज कर रहे हो आप? मैं तो कितने सालों से चिल्ला रहा I हूँ know. इसका और हैरी मैग्वायर को ड्रॉप करो. I know, but he's not Rashford according to me. I don't see any of the Rashford that was He is not mentally there. Yeah. Yeah. मतलब, what do we think when we hear the name Rashford? That Arsenal performance on debut. We hear committed. We hear someone who's running at defenders. We hear someone Exactly. whose crossing was also great. I mean, whose crossing was also great. That was one of Direct expansive play, direct in your Direct. face. Yeah. Exactly, and that's nowhere to be seen. He's lost himself. I'm sad, but yeah, he shouldn't be playing in this team. At least not in the Champions League because that's the only realistic thing we are chasing. I'd give him 4. अकेडमी प्लेयर्स से मेरा थोड़ा बायस रहता तो आई वोंट क्रिटिसाइज चलेगा. हिम दैट मच. I can आज तो understand. जीते भी हैं, आज तो ठीक है. और इसी रैशफोर्ड पे तो आई हैव समथिंग फ्रॉम रैशफोर्ड. बंदे का ट्वीट आया, थोड़ा देख लो, अप्रिशिएट कर लो. द गोट क्रिस्टियानो भाई अब ये रैशफोर्ड बहुत जबरदस्त करता है ये काम है. इतना कमिटमेंट ये सेलिब्रेशन में दिखा रहा है, उतना कमिटमेंट वो पिच पे क्यों नहीं दिखाता? सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है, देखो आप. ठीक है यार, हो जाता है, चलता है. जीतने वाले दिन लेट इट स्लाइड. No, I mean, I think we can sit here and say anything, but we probably don't know, man, what surgeries do. किसी का हुआ है, मीट का हुआ है शायद यहाँ पे surgery और एसीएल मेरा भी हुआ है. हाँ, मैंने so इसके साथ हुआ है. it's difficult. It's very difficult. We have to give that to him, but still, भाई, professional footballer, you have the best facilities, best fitness coaches. Try and do something about it. Probably, he's not going to the World Cup for sure. I would say 5. I love Rashford. Look, I'll be very frank here. I am Team Rashford. I've always been that. A lot of people know it. I have supported him through everything.
and I still think that he can come back. But he looked lost. He looked completely lost. And Mudit bhai ne jo bola wo sahi hai. Like when you think of Rashford, it's pace, power, direct play. And last season he added that strength. So it looked like finally he became the player that we all Yeah, wanted. he built Like himself up. running. Yeah, Hmm. yeah. And look, we have seen a lot of players lose themselves after surgery, Hmm. and back surgeries. Any surgery is always hard. I mean, you have seen Shaw how he lost himself, right, for a good Hmm. couple of years, and we Yeah. have seen a lot of players. Like we have seen Hargreaves lose himself. We have seen Valencia lose himself. So surgeries take a number on you, and right now he just looks scared. He just looks like he does not know what to do, and then he's Hmm. just a shade of himself. Like it's Hmm. very frustrating to see. I like Maguire. I'd say give him couple of weeks off. Try to see if he can come back. He's a professional footballer, obviously, and I hope that he comes back because an in-form Rashford is sensational to watch. He is what Manchester United we grew up with. He embodies that Yeah, Mancunian man. lad who loves the club, plays for the badge, and plays that brilliant attacking wing football. So yeah, This summer hurts. will be the most important summer of his career. I think not in terms of transfer, but in terms of deciding about भाई मुझे करना क्या है, as in how do I get back to my 100%. And I think he'll get there. He should get there. अच्छा, बिफोर बिफोर वी मूव ऑन, फ्रेड का नंबर्स थोड़ा डिस्कस करें। एक बार रेटिंग तो हो गई, Okay, बट let me rate this Rashford thing, and we can come to that. For me, he was below par. Okay, I understand all the reasons. I understand all the reasons why he should be backed and should be given another season where a fresh start would really help Marcus Rashford. But these ratings are just for the match. So on the match that he has played, he has been disappointing. So I would give him a 4 on the match basis. But I'm not so much into that. Sell him. If he wants to go, that's whole Ah, different story. But if he wants to stay here, I'm happy to have him for the next season. Yes, yes, Anurag. Stats. राइट। सो look at the numbers. Balls recovered first. Balls recovered in the middle first. First in tackles. Surprisingly, मैंने expect नहीं किया था। तब बात भी हुई थी अपनी, and we were saying कि शायद Scott का ना होना could be a problem in this regard. But this man has done amazingly well today. But this is in terms of Manchester United players, right? The game No, No, that 163 no. This is थोड़ी बॉल ये players. रिकवर ओवरऑल करेगा. ओवरऑल सीजन है. अभी ओवरऑल है. आया among, कमेंट. oh, right, among Comments, Manchester comments United में players. Fred's game by numbers versus Spurs, 100% take on success, 86% pass accuracy, 65 touches, 16 passes in the final third, 8 final third entries, 8 possessions won, 5 duels won, 3 chances created, 1 assist. It was Strong an game. amazing Very, very strong performance. game. एंड मतलब वो फ्लेयर देखा था जब एक डीप से बॉल कैरी करके लाया था। ही Uh, गॉट अ बॉल ऑफ किससे लिया था? मीत वांट्स टू किल फर्गूसन। नहीं that नहीं lead. नहीं नहीं नहीं. I नहीं don't. भाई. ठीक है, I understand his sentiment for Marcus Rashford. If he would have said this for Anthony Martial, I would have kicked him out of the podcast. That's a different thing. If Martial was a Mancunian, I would have, but he's not, so I won't. Like Rashford is love. अपने That is लड़कों के लिए understood. थोड़ा स्पेशल बायसनेस है भाई, क्या Exactly, करें। exactly, exactly. Yeah. And he's wearing the shirt of his idol, his mentor. I think I'm not sure if you guys know about this, but उसने Players Tribune में एक article लिखा था when he got the number 9 jersey for England. And everybody should read that article. The way he talks about, the way he waxes lyricals about how he got his first shirt as a 9-year-old, an England shirt with Rooney 9 on it. So it Plug in. just made me proud or more happy with the fact that he got Rooney's number 10 for United as well. So I just want him back because it's special. Plug in. If I know most of y'all know the Players Tribune, my company owns the Players Tribune. Please go and read the articles. They're pretty good.
क्या बात है, आप ये जैसी प्रमोट जैसी कर लो अच्छी अभी। बात जैसी अच्छी बात होगी ना, मुदित भाई फटाफट जंप करके आते हैं, मेरी ऐसे गलती, ऐसे हाथ मैं हो हूँ। जाते हैं, ऐसे हाथ हो जैसे ही जाते कुछ हैं। मगवायर जैसे ही की कुछ बात होती है तो उम्मीद तो बात वाहियात, मत करना मगवायर के बारे में। जैसे ही कुछ वाहियात आएगा ना, तो मुदित भाई इज द फर्स्ट वन लाइक, अरे मैं नहीं लिखता हूँ रे। वो ट्रेडिशनल तो सब स्टिल मीडिया से। है ही, क्लिक बेट के लिए करना पड़ता है। दोगलापन है जो। दिख रहा है, दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट our another winger, Jadon Sancho. Provided an assist, uh, did good intricate passes, मस्त छोटे छोटे स्पेसेस में वो बॉल्स निकाल रहा था, was successful most of the times. काफी मेहनत किया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमिंग बैक। ठीक है, हर बार सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट ही ट्राइड हार्ड। हाउ डू यू गाइस रेट जेडन सांचो हियर? I'll start with a 8. A sensational performance. He's balling. He's absolute balling. Best player in our team in the last 10 games. And again, he showed why we paid that much money. I mean, obviously, नए league से आया है, तो it takes time to adjust. Like first season, almost always it's a write-off at times for a lot of players. But it's good that he's finally showing it up, and he's a sensational player. Like the way he passes, the way he does everything, it's just so ट्रिपल्स, beautiful to watch. It's just टाइमिंग so ऑफ द beautiful to रन्स। watch. Exactly. I'll give him And that 6.5. Sorry, Paritosh. बोल दे. no, I am just saying because he's been balling. Like I know he's not. This is not one of his best performances for sure. Like he has Yeah, I had know. far better performances, but I love the way he plays. He's like a classic Manchester United winger, and today also he like showed it in a lot of times. Hmm. अरे वो अमर भाई, कुलूस. ओले ने खिलाया नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? वो जब वो I think रैशफोर्ड ज्यादा खेल रहा yes. था, तब भी खिला रहे थे उसको। आई डोंट Hmm. अग्री विद यू। और बेचारा बोले को रेस्ट लेने दो, हो गया उसका, मैनचेस्टर यूनाइटेड का हो गया। लेट हिम रेस्ट, उसकी डॉटर के मैचेस एंजॉय करने दो। he'll think about his next moves. Let's not picture in Ole right now for this game. Hmm. अच्छा, बाय द वे, दिस इज कॉन्टे फॉर ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ हाँ, दोनों अच्छी It was तरह. an I know him very well. Not a surprise in a moment team needed. He's always present. मतलब कॉन्टे का आधा हार्ट ना, he's half hearted into Spurs job. He realized it after taking it how shit the job is. How shit the job is उस to be a Spurs उससे अच्छा manager. यूनाइटेड का ही Very पुश कर difficult. लेता। ही वॉज वेटिंग फॉर यूनाइटेड जॉब, ये तो ओपन सीक्रेट है। वो तो बैठा ही इस चक्कर में था कि मेरे को लाएंगे, मेरे को लाएंगे। वो फिर नहीं मिला तो उसने बोला भाई अब तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। वही वही वही। सांचो का मेरा रेटिंग is 6.5 majorly because 6.5। हाँ, because I expected him to kind of catch Kulusevski in the game. अगर वो मेरी एनालिसिस के हिसाब से रॉन्ग है तो भाई मैं गलत हूँ, लेकिन आई वांटेड हिम टू hold on to Kulusevski because Kulusevski was playing very well, and as a winger, I think his role has to be to also support the defender with the wing back, the full He back was behind trying. him. I He was trying I a know lot of I know times. I know, but I wanted more there. थोड़ा sorry, I don't. Of course, भाई baller, best player for us right now in form, but this game specifically, we could have avoided a lot more attack from his side if he would have just strayed back आपके a little. मगवायर और सांचो की रेटिंग के बीच में एक 1.5 का डिफरेंस है, जस्ट सेइंग। अनुराग, How does it matter? सबका रेटिंग भी सिमिलर ही था मगवायर के लिए. नहीं, छोड़ो ना. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सांचो का यार परफॉर्मेंस, आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड बेटर ऑफ हिम। वही ना, क्योंकि इतने मैचेस से अच्छा खेलता आ रहा है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। तो देयर वर कपल ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे ज़्यादा कर सकता था। 6.5 ही मेरा, आई एग्री विद मदद भाई, 6.5। For me, it was a 7.5 performance. Uh, Kunal says Anurag sleeps in between. भाई नहीं भाई. उसका भरोसा नहीं होता है। बिटवीन नहीं, वो हमेशा सोता रहता है, कभी कभी जगा रहता है। मेहनत इतनी करनी पड़ती है, ये सब किसने बनाया? मैंने ये सारी मेहनत करने में इतनी थकान हो जाती है ना, आप समझते नहीं कुणाल भाई। हाँ, इसलिए सो जाता है 16 घंटा। For me, it was a 7.5 performance. Just because he's playing well, we cannot. Uh,
यार बायसनेस लेके नहीं रेटिंग कर सकते ना कि पिछले उसके ज्यादा अच्छा खेल रहा है तो इसमें भी नहीं, यू नो। वही सिर्फ रीजन नहीं था, डिफेंसिवली नहीं, अब मैं चाहिए अनुराग थोड़ा का वो सा। एड्रेस कर रहा हूँ पॉइंट। हाँ, चूतिया है। नहीं रे, क्या बात कर रहे हैं। क्या हो ठीक गया, है, सुना तो नहीं बैट मैंने। वेंस देखो, होता आगे है, इट्स बढ़ो, ओके। नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट लेट्स प्लेयर, सॉरी। लेट्स टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट्स। कोई रह गया क्या? मेन रोनाल्डो रह गया। गाय हैट्रिक। क्या बात कर रहे हो? तो उसको रेट करना है? मीद रोनाल्डो भूल गया। नहीं भूला नहीं है भाई, ये प्लान था। देख लो क्या क्या करता है भाइयों, चैट्स में देख लो ये सब सब्सक्राइबर्स और कंटेंट के लिए क्या क्या कर रहा है। करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, थोड़ा मोटिवेट करो हमको भी। और करूंगा, और भूल जाऊंगा चीजें। रोनाल्डो, रोनाल्डो, यू 10 out of 10, परफेक्ट, परफेक्ट। मतलब I'd give him एक on a day like this, I'd give him 9, but I give him 10 because आज साले ने ट्रैक बैक भी किया। I was so shocked at that. I mean, last 2 games से मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, बैक, राइट he's बैक, he's worked at हर that जगह थे brilliantly. आंसर जी। I'll fucking give him 11 out of 10. 11 आउट। I'll give him a 9. 8, Uh, 8 से शुरू, 9 से शुरू किया था, 11 तक पहुंच गए। ये 9-11 ही करते रहो आप। 11 bro. I'll give him a 9. Hold up play should have been a little bit better. There were times then where he just gave away the ball when he could have done better. Like, but again, that's just finding small faults in a sensational performance. The Yeah. first goal kills it, and the header was also sensational. So I'm just being a little bit picky here, saying that it's a 9. But if I give it We the need same way I Ritwik give here. Sancho, then it's 10 out of 10 for sure. नहीं परितोष भाई, मैं समझ रहा हूँ, जैसे वो बच्चे के नजर उतारते हैं ना, आप वही कर रहे हो। कि हाँ ये गलती है यार, ये सुंदर तो हाँ. बहुत है, लेकिन थोड़ी सी गलती है। यार भाई हेडर and भाई थोड़ा, एथलेटिको के पहले ये परफॉर्मेंस, we needed this. आई थिंक इन द होल कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है टीम एंड रोनाल्डो। ये पूरी टीम को कॉन्फिडेंस देगा। Yeah. एवरीबॉडी सिटिंग ऑन द बेंच इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ योहान माटा, जो कभी खेल ही नहीं रहा है आजकल। ठीक है, द वे दे वर, अच्छा है. यू नो। The day we need Juan Mata to come on the pitch to affect the game is the day we should stop watching and we are right we of the are we are season. playing Maguire regularly, we are And playing right of the Rashford season. regularly। ठीक है, तो Nowhere near that. Nowhere. Mata was finished 3 years ago, man. Was finished 3 years we are ago. playing Jesse Lingard in the team. He still offers far more than Mata. Mata is I completely think gone. he offered nothing in the He's last match. here. He's here for the PR, and he will end up being one of that in that brand option Andy Cole Club role of ambassador. क्लब एम्बेसडर बनेगा ambassador वो role. Exactly. उस Yeah, woi. So yeah, After this unless and until it's performance, a 92nd minute and we have a free kick just outside the box and Ronaldo finally decides कि भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, किसी और को दे दो तो sub him in, let him take it because he might as well score. Yeah, but nothing against the guy, man. Yeah, Wonderful, love him. wonderful Sensational guy. service to Like, United. yeah. He has done amazing work on and off the field, and whenever he's been on it, he has given his 100%. So Yeah, sensational guy, but passed it 3 years ago. yeah, absolutely. एंड पीआर वाइज भी ही इज क्वाइट अ कू। उसका वो जो क्या वन फुटबॉल है, क्या नाम है उसके, एक उसने वो मूवमेंट चला रखा है ना, लोगों हाँ को हाँ हाँ, असेंबल करके हाँ, चैरिटी वगैरह के वन लिए। वन फुटबॉल नहीं है, उसका कुछ और नाम था, बट हाँ, हाँ वन वही फुटबॉल मेरे समथिंग को नहीं है भी भाई, सिमिलर याद नाम नहीं है. दूसरा था। ऐप है। वही वर्क ऑफ द पिच ऑब्वियसली। हाँ तो वो पीआर वाइज वही अपने लिए काफी सही बंदा है, इंडिया भी आ चुका है। 1% ऑफ ईयरली सैलरी ऐसा कुछ था ना। हाँ हाँ. डोनेट कर देंगे जो से एसोसिएटेड है प्लेयर्स। ट्रू, ट्रू। सो रोनाल्डो इज अ 10 out of 10। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, मुदित, परितोष, अनुराग, सुनो मत। ठीक है, इट वाज अ परफेक्ट परफॉर्मेंस। एक स्ट्राइकर अगर हैट्रिक मारता है फिर भी तुम बोल रहे हो कि ये नहीं था, वो नहीं था, विच इज अ विनर। फर्स्ट गोल विनर प्लस द सेकंड गोल, हर टाइम लीड दिया है बंदा। सो बोलने दो, दुनिया जो भी बोले बोलने दो। ठीक है, इट वाज अ 10 out of 10 परफॉर्मेंस बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर मी। अरे Krishna as a comment लेट्स here. Krishna, actually, I was not saying कि रोनाल्डो की लेता. I was saying कि मैं रुतविज की लेता अगर वो आता रोनाल्डो के बारे में.
And look, again, I was not wrong yesterday, and I'm not wrong today as well. To be honest, one goal in 10 games is also frustrating. So हाँ obviously, he's an amazing player. He's कल वही बात हुई थी कि he's just limited now given his age. Sensational player, obviously, 807 goals, highest in the history of football. So फीफा sensational player, obviously. Yeah. So just waiting for Pele to tweet के मैंने 1000 से ज्यादा मारे या 1200. I don't know where the counter is. He just adds 50 goals every time he comes on media. So, but then it begs the question as परितोषित कि भाई तुम easy goals miss कर रहे हो, तुम्हारा talent आज दिखा है. This is you. This is you. You shouldn't be It's missing his those age. chances. It's his age. Look, age happens. 26, मुझे लगता 27 है year Ronaldo that scored पोर्टुगल 50 ट्रिप goals a का season. हाँ आई थिंक दैट जो पोर्टुगल का ट्रिप किया है ना उसमें वो नजर उतार के आ गया है. ठीक है, हवन ववन करवाने गया था कि ठीक है वो जो फिनिशिंग नहीं हो रहा है अब सब हो रहा है. ठीक है, अब होगा भी पूरा सीजन. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. इट विल बी अ गुड डॉगड फाइट फॉर टॉप 4 एंड चैंपियंस लीग. आई होप. वो पता है वहाँ पे सुन अपने अपने कह रहा हूँ पोर्चुगल और यहाँ पे वो माना जाता है कि थ्रू योर बेली बटन बैड स्पिरिट्स कैन एंटर यू. तो रोनाल्डो अपना कवर करके खेल रहा था पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कॉटन का पैड लगा के बेली बटन पे और फिर खेलता था. वो तो सही कह रहा है Great. भाई, वो पोर्चुगल इसीलिए गया है कुछ करा के आया है वो. I think he needed the rest. अच्छा था. Like I mean, obviously we got absolutely pumped by Manchester City, and yeah, let's forget that match. But I think he needed the rest. That's it. अरे कुणाल That's भाई what it is. रुक जाओ, ये एथलेटिको का मैच हो तो फिर जाने तो ट्रिप पे. पहले ये रुक जाओ. पता चला एथलेटिको का ट्रिप नहीं, वो ट्रिप ले रहा है. Properly rest up, Ronaldo can do wonders. Anyway, let's talk about the substitutes. Victor Lindelof. Didn't have a lot to show. यार. I mean, he just came in and was क्या ही good. रेट कर देंगे Like यार इतने कम time में. exactly, not enough time to rate. Okay, तो कवानी में भी सेम करोगे. Same. Like these guys just came in and look, Cavani and all they did good. Like you could give them a 6, you could give them a 7. They did not play enough to know Yeah. Warrant better or yeah, worse rating जो दे yeah, दिया मतलब बेसिक जो they did the job. yeah, exactly, yeah. So only way you could change their ratings is if they had affected the goal in each either part, but they did not. So no Cavani ratings almost right did. now. Yeah, almost. So if he had, then Uh, obviously he would have been rated. Not I enough want to time for talk him to about do anything. the game that is upcoming. थोड़ा देर बात करते हैं about the Atletico and what do you guys expect? What do you guys see? No predictions. Prediction नहीं. मैं जो भी Score line बोलूंगा predict कुछ नहीं कर. गड़बड़ी हो जाएगी यार. मैं बोलता ही I नहीं हूँ think after इसलिए. this game, what I mean, I don't think Ragnick works this way that he'll see this game and then look what he can do different to Atletico. I think he'll mostly be looking at the fact that Atletico kind of were dominating us in the first leg, and I think the major starting point would be to not let them have the ball that much and not sit back against them. They find a way eventually to get a goal in, man, which we can't afford. So I think we should be probably maintaining a balance. कि जहाँ ऐसा नहीं है कि वो लोग ने बॉल होल्ड कर रखी है तो हम ड्रॉप बैक ही हो जाए. अटैक देम, डू टैक्टिकल फाउल्स करो. यू हैव टू डिसरप्ट डिएगो सिमियोने's टीम. उनको डिसरप्ट करोगे ना, दे ऑटोमेटिकली गिवन. तो वो डिसरप्शन का आई थिंक शुड बी समथिंग टू. And Mudit bhai, to add to what you said, they will find a way to get a goal, and we will find a way to not defend. So Yeah, sitting back is not good for either of the team. absolutely. Like, So yeah, उसमें ही both नहीं. ends अपना tension है उसका. Hmm. Atletico game, I think lot has been said about Atletico not being a good team. Uh, they don't play the way they used to, and they are actually not a very good team. But then we also sometimes show up, we sometimes don't. Uh, all I am worried about is the fact that Maguire will start, and he's in a horrible state of form right now. So I would prefer with Lindelof, Varane than Maguire, but I don't think that is happening. Um, Sancho limped off, if I saw correctly. Yeah. I maybe Yeah. because he was tired or like I don't know.
but that's a worry. We need him. Without him, it's not possible. Obviously, we should not start Rashford. Elanga should come in, and hopefully McTominay also comes in. I would not mind a half time 45-minute performance of Matic the same way that he did today, but I think McTominay should hopefully come in so that to shore up that side. Yeah. So does Bruno find a place? Yeah, instead of Pogba. Pratyush says it will be a touch and go game for any team that wins. It's 50-50. Siddharth says Prime David again needed against Atletico Madrid. Hopefully we don't need like hopefully we don't. अनुराग यार क्या कर रहा है मेरी कमेंट बंद कर दी तूने. No matter whom we play against, I just want Maguire out of the team. His mistake is covered because of the hat trick. भूल जाओ. It was Yeah. unfortunate. It was unfortunate. No, but before the match also we talked about that. All of us, nobody wants him in the team. Like it's unfortunate, tha, but like he's still making those mistakes. We need him out. He's cooked. He's completely gone. So it's for his good as well. Like it's not just apni team ke liye, it's about him as well. He's being slaughtered right now, left, right, and center, and things like this are not happening. Helping him. अब कल एटलेटिको के सामने सेम भूल की या ऐसा ही कुछ भी हो गया, and people will kill him. They will literally kill him. So we don't want that. We don't But want my that. And उसके problem बाद is that जो कैमियो आज दिया था विक्टर लिंडलॉफ ने, it was shaky as well. दो बार मुझे Defenders ऐसा coming लगा कि it on, could have. defenders coming on mid game exactly. is always shaky. He's always Always. shaky. Like yeah, you need to be in the game for 90 minutes to be there. Like you add a third defender to already two, and that's okay. And even though I personally hate that, like apne ko, I can remember 3 separate occasions where Mourinho and Van Gaal tried that, and we fucking gave a goal away. So I hate doing that. Never bring a defender on, at least a centre back on if we are defending, unless and until that's an injury. Never do that. Yeah. Yeah. Will Matic start against Atletico Madrid? I hope so. It's I a don't big know game. about McTominay का कैसा है, I don't know. So yeah, up in the air. So एक चीज देखा है मैंने मैक्टो का कि मैटिच whenever के he साथ is मीत injured and he सीन ये है, comes back, मैटिच ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है जो वो हाँ देनी वही होती है उसे exactly. 3-4 मैच में. तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट मैच में भी यही करने वाला है. I think Matic को गेम मैनेजमेंट के लिए बुलाएगा वो अगले गेम में if things are in our favor, or that would be better. We can't expect another 60-70 minutes from him. Yeah. so for me, McTominay whenever he comes back from the injury, उसका इतना अच्छा नहीं होता performance, especially the first match that he is coming back after something. He's always shaky and पता नहीं positionally he is a little bit doing That is shit. regardless. Positionally, regardless, he's a liability. So I would rather see Matic start. And what about Fred? If we are putting in Bruno, if we are not dropping Pogba is not playing. Pogba, Pogba is not playing. Get Elanga So, in. Rivas, there is no news on the part of Bruno. He might make it, but then Fred, after this performance, is he an undroppable? Yeah. So, what midfield you go with? Let's not talk about attackers or defenders right now. What midfield you want? Assuming we'll go for a 4-3-3. For me, McFred and Bruno. If Same. Bruno is fit and McTominay is fit. अगर ब्रूनो को कोविड है तो वो डेफिनेटली नहीं खेल रहा, बट वो रिवील होगा. आई डोंट नो. कोविड नहीं है ना मुदित भाई, पता लगे क्या था, वो इलनेस है, वो No, but कोविड का नहीं. I know, but United have hid COVID cases before. I mean, not hid, but they've kind of not revealed it. So हो भी सकता है, but whatever. I mean, if it's that, he's definitely not playing. So I am considering he won't start.
सो आई थिंक जो सेम रहा है आज वही होगा, जैसा खेला, जैसा फॉर्मेशन रहा है, सेम टीम, आई एम प्रेडिक्टिंग द सेम टीम। So Rashford this start. is रैशफोर्ड स्टार्ट। Sorry. Yeah. Because look, रैशफोर्ड personally, this प्लस। is मैं खुद बोल रहा हूँ कि he won't start. So like that's just asking. नो नो यार, आई थिंक इलांगा को पेस के लिए लाएगा बाद में इफ वी नीड। आई थिंक दैट गेम विल बी मोर ऑफ गेम मैनेजमेंट अच्छा, in the I just starting want to because say on they'll this, climb on us. मतलब जैसा भी सीजन होने वाला हो, आई हैव बीन, पता नहीं लोग कैसा, आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय रैल्फ, जो उसने स्क्वाड को शेप करना स्टार्ट किया है। एंड इवन दो देयर आर फॉल्ट्स, वो बंदा अपने उस पे लगा पड़ा है कि इनको ऐसे खिलाना है, तुम हारो You कुछ need a, करो, you need बट a यू आर different eye मूविंग इन to अ see डायरेक्शन। that. I mean, you need a different eye to see that because क्या है जो जहाँ हम थे और जहाँ अभी हम हैं उसमें काफी फर्क आ चुका है. But people are not seeing it because everything has happened so fast. At the end of the season when everything comes to a stop, we'll be able to realize कि हाँ भाई इस बंदे ने ये किया है. एंड और एंड एक्चुअली रैल्फ के मैनेजमेंट चॉइस के साथ अगर हम जाते हैं, रैल्फ के स्ट्रक्चर और प्लान के हिसाब से आगे जाते हैं, तो बेसिकली जो काम एक मैनेजर समर में आके अगले 6 महीने में करेगा ना, वो 6 महीने का काम ऑलरेडी हो चुका है एक तरीके से। तो absolutely. दैट्स अ वेरी बिग प्लस। तो आई एम वेरी होपफुल, मैं हर स्ट्रीम में कहता हूँ आई एम वेरी on that होपफुल फॉर द note, फ्यूचर। this is 400th victory for Manchester United at Old Trafford. First team in the competition history to achieve this tally. Let's make it 500, 600, and 1,000 very very soon. I Not think satisfied with also 20. yeah, also adding to this 400th Premier League win, I think we have beaten Tottenham the most at home of any teams in the Premier League. Adding to this stat, so we love beating Tottenham at home. Lads, it's Tottenham. Krishna is saying क्यों टेंशन ले रहे हो जमाने बाद यूनाइटेड जीता है, just celebrate and enjoy the moment. We are enjoying it a lot. Krishna, Fan, we are proper loving fan. it. We are loving it, but we are also thinking ahead because you know what, आज ना एक चीज कॉमन है यहाँ चारों लोगों में and the people who are commenting that United have a very good shot at going through the next round, जो probably मैच के पहले थोड़ा skeptical था. So I think that's the change this match is made. ठीक है, I'll go in that match with a lot of expectations. United will play good. बाकी तो टाइम ही बताएगा. आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग आउटप्लेड लाइक वी डिड एट their stadium, like वो we did रैगनिक at will definitely City plan game. भाई, बहुत Yeah, जबरदस्त प्लान करने वाला है. German I, bastard will be on it. I think I also agree to your point that Rangnick has shaped us very well. Only thing is, which I am skeptical about is he needs the signings. Like whoever manager comes in, or if we were, whatever happens, we just need those three signings next season, regardless. I would say we need five. That's never happening. We need three. We need a CDM that can control the game. We need a striker that can play week in, week out, and like rotate with Ronaldo. And I think we need another attacker as well. Not saying a CB as of now, but that would be great. And then a right back also would be great. But these three we need. And if we do that, then obviously what Rangnick has done will we can build it in the next season, and it will be huge. So let's hope that happens. Ralf Ragnick asked about Cristiano Ronaldo if it's challenge to manage him. He said yes it is. Yes it is. He showed today that he still got the quality to play for a club like Manchester United. I Yeah, and think one more thing, what just sorry, just one more yeah, thing. yeah. This is what I love about Ralph. On the point, he does not fucking care about anyone, and he just says what he likes, and I love that. No About I sugarcoating. time think we about time we had a manager like this again. आई थिंक इट स्लाइटली ऑल्सो मीन्स दैट कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं उसको टेक ऑफ भी कैसे करूं. मैं तो सोच रहा था 60 मिनट पे उसको आफ्टर अ ब्रेस टू लेट हिम आउट, बट ही गोज एंड स्कोर्स द विनर. हाउ डू आई टेक हिम ऑफ? आई थिंक दिस मैसेज ऑल्सो सिग्निफाइज दैट. हाँ. अच्छा, वैसे डू यू गाइस थिंक कि मतलब डेस्टिनी टाइप की कुछ चीज होती है? रोनाल्डो हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑन द नाइट दैट टॉम ब्रेडी वाज इन द स्टेडियम। ये सब क्या मतलब स्टोरी लिखते हैं, क्या करते हैं भाई? ये टॉम ब्रेडी आया है, वो मैसेज दे रहा है आप रोनाल्डो को, तो उस अगर हिसाब मुदित से भाई वर्ल्ड जाते रिकॉर्ड तो वन बजा गोल रहा मारता. है। मगवायर मारता भाई। मैंने तो वो तो दिया और अभी कितने मारा दिए है. और मैं था भी नहीं वहाँ.
हैट्रिक मारता ऑन गोल्स की. मतलब कुछ भी बोलो, सेंट कुछ पीटर्सबर्ग भी तो जा बोलो, रहा हूँ मैं. सेंट मगवायर पीटर्सबर्ग का तो जाऊंगा. फिनिशिंग बहुत प्यारा था. कैंसिल नहीं बहुत कर दिया प्यारा सेंट फिनिश था. पीटर्सबर्ग फ्रांस अरे में? नहीं, सॉरी, मैं बोल पेरिस. रहा था दोहा जाऊंगा, दोहा. वर्ल्ड कप के लिए इनका प्लान है, वर्ल्ड कप के कतर लिए, हाँ जाएंगे. हाँ, तो प्रॉब्लम हाँ. नहीं, नहीं नहीं, मुझे अभी. वो एक ही गेम के लिए जाऊंगा मैं. Paritosh bhai, what you said, it's reflecting here as well. When he was asked about the win today, it was probably our best performance considering the quality of the opponents. It was necessary. We had to win the game, and that will give us a big boost for the next game. No filters. He is saying that हाँ हम जो बड़े पोजीशंस मैंने खेले उसमें सिटी हारा, एथलेटिको ड्रॉ हुआ, ये जीता हूँ, तो ये मेरा सबसे बड़ा विक्ट्री है. Nothing else. But No, it's good. A lot of people before, like I personally had no idea who this guy was before he came to United. I had heard about his name, never followed him. I personally don't follow anything outside Manchester United. So a lot of people had told me that he's very, very, very on the point, and he knows what he wants. He knows what he does, and just does that. He does not care, and he might even leave if he feels he's not heard or if he's not getting what he wants. So, and now you can see it. Now you can see where it comes from. Every press conference, everything that he does on and off the pitch, like it shows that he has a clear thought process and a clear view of how football should be played, and he's doing that. टिपिकल जर्मन एफिशिएंसी ना परितोष भाई. Yeah, कौन देख exactly, लो, कोई exactly. जर्मन मैनेजर कुछ नहीं करता इधर उधर की बात, सीधा ऑन पॉइंट रहता हूँ. We अगर need आगे that. बढ़े जैसे तो मुदित भाई ने बोला. अगर आगे बढ़े तो अगर आगे बढ़े तो तिलक भाई आपका क्वेश्चन नहीं ले पाया, सॉरी, ध्यान नहीं रहा मेरा. दिस इज द क्वेश्चन. Which team do we want to face in the Champions League round of Who, 16? who, who Sorry, are 8. there in the next round? Like good enough to be there. Like there's City, Real Real, Liverpool, Madrid. Bayern, and लिवरपूल, सिटी, चेल्सी. Real Madrid. बोल दिया रियल मैड्रिड. I want Real Madrid. I would also want Real Madrid because out of every other team, maybe Chelsea भी, क्योंकि चेल्सी का हमें पता नहीं है कि मेंटल स्टेट क्या रहेगा. अगर हम उस सेंस में देखें कि वीकेस्ट टीम कौन सी है, रियल मैड्रिड मैंने इसलिए बोला कि बेशक दे वन अगेंस्ट पीएसजी, दैट फॉर मी वाज actually a game of two poor sides making a game look very good. Benzema इतना स्पेस masterclass. देकर इतना वो करना. Well said. Well said. I want Real Madrid. हाँ, I they want will Real give us Madrid. spaces. मतलब Hmm? yes, their midfield is very superior, but I think we have enough quality to give them a tough fight. Other relatively better than the other teams that are there. So there is Bayern Munich, there is Liverpool, Real Madrid, Manchester City. If we go through Manchester United, along with that Ajax, Benfica, I expect Ajax to go through. Ajax, Uh, Ajax. I want Ajax then. there Showed is look. Yeah, Chelsea, Lille, personally, Chelsea. I hate facing Real Madrid. I just hate them facing. It's we never show up. I like all my memories of facing Madrid in a Champions League night is bad. फोर Are थ्री bad. परितोष भाई, 4-3 डेविड बेकम फ्री किक 2 गोल मारे थे. दैट नाइट वाज We स्पेशल. s- ओवरऑल we हार still गए थे went हम. out. हाँ. हाँ, भाई So ओवर. and भाई Ronaldo hat trick. So चैंपियंस लीग का ओनर है अपने पास, तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेगा, उनको भी पेलेगा. hopefully, Real but like Madrid अभी अभी देर है. personal experience, I hate Real Madrid. I think that is the worst team to play in the Champions League, even more than Barcelona. Second, I think is Bayern, another team that I hate. We have the इंटरेस्टिंग greatest कमेंट. night of our lives in Barcelona versus Bayern, but that Robin goal, oh my God, that killed us. So, इंटरेस्टिंग so कमेंट फ्रॉम परितोष. प्रत्युष का कमेंट देख. आई वांट टू फेस Ajax because it will be a showcase match for yeah, Ten I Hag. was also going to say that I the only reason I want Ajax is I want to see what It Eric will. Ten Hag There is are all two more about. names. There are two more names I want to discuss. That is, so Juventus Villarreal is 1-1 right now. Could be anything. And there is Lille Chelsea. Lille unlikely right now. Chelsea is favorites. They are favorites. So out of Chelsea these would be teams, fun. Chelsea would be हम्म, fun. हम्म. Like चेल्सी का क्योंकि my सब कुछ अनस्टेबल है, तो अभी मेंटल yeah स्टेट उनका क्या रहेगा, कुड बी एन इजी गेम. yeah and look मैं तो पूरा हिस्ट्री पे ही जा रहा हूँ. It is not about the current teams. Fuck that.
Chelsea we beat in Champions League. Like we just show up against them in the Champions League. So it's better to face them than Madrid. I hate Madrid. I don't want that fucking white shirt at Old Trafford. Ranjit, Indrajit says Ronaldo will join PSG and win UCL. भाई Ronaldo will PSG never जाके go कोई to a नहीं club. जीता है. No, Ronaldo will never go to a club in which Messi is there. Not because he hates him, he doesn't, but because he just doesn't इंद्रजीत want to. भाई इसमें एक बार इंद्रजीत भाई का दोबारा लेना. Sure. इसमें एक चीज और है. तो देयर डायरेक्टर लियोनार्डो के साथ पंगा चल रहा है. दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाँ, डायरेक्टर टू कम इन. तो I think अगर Molina or someone तो tweeted, right? वो पूरा ऐसा उसका हाँ, Yeah, स्कैंडल. मोलिना yeah, ने. yeah, yeah. तो द थिंग इज कि दे आर लुकिंग एट चेंजिंग देयर फिलोसफी. मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ और जो जनरल कंसेंसस भी हो रहा है कि आने वाले टाइम में दे आर गोइंग टू गो द मैन सिटी मॉडल. यंग प्लेयर लाएंगे, उनको बनाएंगे. दे आर नॉट गोइंग टू गो फॉर अनदर स्टार साइनिंग इस समर में. ऑलरेडी दे आर गोइंग टू लूज एम्बापे एंड देन they'll start building a new team. I don't see Ronaldo going to PSG. मेसी वाला पॉइंट में थोड़ी सी बात है बुदित भाई की कि शायद नहीं जाएगा. बट अगर यूनाइटेड क्वालिफाई हो जाती है टॉप 4 के लिए, एक रियलिस्टिकली एक और सीन बेस में रियलिस्टिकली देखोगे, अगर यूनाइटेड का आने वाला टाइम हम सब होप कर रहे हैं और सबको लग रहा है, जेन्युइनली लग रहा है कि ठीक होने वाला है. रोनाल्डो का करियर वेन हो रहा है. ऐसे टाइम पे सेकंड फिडल प्ले करते हुए अगर वो प्रीमियर लीग में रह के ट्रॉफी जीतता है ना, वो उसके करियर को बेटर स्टेड में रखेगी अगर वो पीएसजी जाके कुछ जीत जाता है. क्योंकि नेक्स्ट सीजन भी चैंपियंस लीग नहीं जीतेगी पीएसजी. उनको टाइम लगेगा Yes. चैंपियंस लीग टाइप टीम Still, बनाने में. probably both उससे debate बेटर है बहुत कि important है. मैनचेस्टर यूनाइटेड में If रह के if एफए at कप this जीतना. age, if at this age he manages to win a Premier League, पूरा आर्गुमेंट खत्म इसलिए हो आया जाएगा. था, इसलिए आया था पर हुआ नहीं. आई वांट बायर्न Possible. म्यूनिख. जब बाहर ही होना है तो अच्छी टीम से लड़ो. अगर जीते तो रिस्पेक्ट, नहीं तो अच्छी टीम से बाहर होने में दुख क्या. ये अच्छा है, क्या कर आइडियलिस्टिक कमेंट है. ठीक है, जो वीकेस्ट होता है उनसे वो आए तो बेस्ट है. इवन आई एग्री उधर दैट इफ वी फेस आईएक्स इट विल बी द. आईएक्स को लाइटली दैट मत लो. दे हैड दैट 6 कमेंट 6 आउट ऑफ 6 विंस इन द ग्रुप स्टेजेस. हाँ दैट ठीक दैट है. कमेंट दैट कमेंट वाज सो 2012. ये आइडियल बातें सब वहाँ खत्म हो गई यार कृष्णा भाई. अब रियलिटी कुणाल में हम आ गए हैं. अब कुणाल का हमको भी कमेंट देख यार नहीं. I नहीं, don't सीट want to मेरे को play a team with no sponsors. सिद्धार्थ से परितोष का बार्सिलोना फैन निकल रहा है बाहर बाहर. निकल क्या गए. बात नहीं है, नहीं, क्या बात एक्चुअली है. ऐसा नहीं है. आई हेट बार्सिलोना स्पेशली क्योंकि 2 फाइनल अपने को हराए, तो आई हेट देम. बट द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन द चैंपियंस लीग फॉर मी ग्रोइंग अप वाज दैट स्कोल्स थंडर बास्टर्ड directly into the top corner. So I don't mind facing them. At least more than Madrid, because Madrid has given me bad memories all the time. So that is why Madrid I hate, and I hate more, at least in the group stages. Debate between Messi and Ronaldo is over today. नहीं So मैं apparently एक stat है. मेसी का पूरा नहीं भाई. सीजन का टैली इज इक्वल टू रोनाल्डो का आज का स्कोर इन द लीग. They, it's a I don't think we मतलब should discuss this. Like they're too good in their हाँ, own मतलब rights, and फेयर इनफ, it फेयर is हेट what it is. हेट करने की जरूरत नहीं है. बस नहीं रोनाल्डो नहीं, बेटर है नॉट तो क्या. हेटिंग ऑन एनीवन. इट्स अ गुड फीट. सुना नहीं. अच्छा, एंड में आप क्या बोले? वापस जरा रिपीट कर दो एक बार. मैंने बोला हेट करने की, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है. जो बढ़िया खेलता है वो अच्छा प्लेयर है, जो कि रोनाल्डो है. नहीं नहीं, आप बढ़िया प्लेयर, आप ऐसा नहीं बोले. आप ऐसा बोले रोनाल्डो इज बेटर है. सुन लिया, मैंने सुन लिया. Zidane and Ronaldo, is it possible? PSG, Ronaldo, Zidane, UCL. नहीं. Yeah, Zidane to PSG could be a possibility, but let's see. उनका नया डायरेक्टर क्या करता है और which direction they go in. It's interesting for PSG as well कि वो अब कहाँ जाएंगे. I think now they need to soul search as well कि हमको कहाँ जाना है. यूनाइटेड काफी सालों से ट्राई कर रहा है. ठीक है, it's a reflection time for PSG कि सालों साल हार रहे हैं. It is done. They need a new path. I think they've thrown This money. exactly their stupid way of just buying superstars and hoping that everything gels up is very wrong. Uh, for a team that is like Paris, the whole area does not have any other top team. So it's a huge city and it has no other top team. So PSG actually has a very good base
to establish themselves as the premier team in France and have that academy that pulls a lot of players out from France. And we know there are good players in France, right? But they just don't do that. They just buy superstars from every top club in Madrid and Barcelona and Bayern and Juventus, and then this is what they end up with. So परितोष भाई, that's उनके तो हमको अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड देख के लगता है कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये वो फलाना ढिक। उनका एक्चुअल में बहुत ज्यादा it's पंगे है पीएसजी के। yeah, true. That is the thing. I मतलब don't. It's डिटेल में stupid. जाके It's stupid. I don't understand why. हाँ, Like अपने जैसे for example Manchester देख लो तो Manchester being what half the size of the city Paris is and has two big clubs. So there's a drain between two clubs. Paris does not have it. So why not try to do that instead of buying those superstars and making it making a super team? It does not work. So I think they need to change. I agree Says with you France there. also have a very good talent pool. I agree. So, guys, over 20 people are watching us. If you haven't subscribed, please subscribe. Follow कीजिए हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे काफी हम करते रहते हैं ट्वीट एंड इंस्टा स्टोरीज एंड वेरी गुड क्वालिटी। और हमने 200 पे एक गिव अवे दिया था डेविड बैकम 2002 जर्सी। ऑन 1000 सब्सक्राइबर्स वी आर गिविंग अवे अ 1999 ओले गुनाह सोल्शायर जर्सी। कैन यू फकिंग बिलीव इट? तुम जो सुनते हो ना उसका जर्सी दे रहे हो। कैन यू फकिंग बिलीव इट? हाँ, मुझे चाहिए था, मुझे दे दो दैट यार, मुझे जर्सी दे दो। दैट जर्सी इज माय फेवरेट जर्सी आफ्टर ब्रांड रॉबसन का बारसा के अगेंस्ट वाला जर्सी, वाइट कलर वाला जो क्लासिक एडिडास ओरिजिनल्स वाला। उसके बाद 99 ओले का जर्सी इज मतलब अपर एक्लॉन्स। वो जर्सी तो मस्ट होना ही होना चाहिए। मेरे को दे दो मुदित भाई। और और यहाँ मैंने फुल स्लीव ही रखा, मैंने कटवा दिया था, गर्मी होती है बॉम्बे में। अभी सही बोल रहा हूँ, बाद में बोलना मत। कोई बात नहीं, कटता है। आप कटवाने में एक्सपर्ट हो। Apart from that, we are trying to bring in a lot of superstars here, a lot of ex-United players or United players. ठीक है, उसके लिए पर फॉर दैट पिचिंग वी नीड नंबर्स। उसके बिना हम पिच नहीं कर सकते कि भाई आप ऑन 380 सब्सक्राइबर्स यू कम टू अ चैनल। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। तो प्लीज हेल्प अस आउट। If you haven't subscribed, please subscribe because 2/3 of you people don't subscribe. Uh, so do that so that we can bring in a lot of things that we have planned, like United players, current 10x. We are trying a lot. Trust me, we are trying a lot. So please help us out. Follow our socials, and if you want to be here, you get in touch through our socials, and you can be here anytime, when possible. Hope you all had a good match. We'll see you soon tomorrow. And good night and enjoy the victory. That So, Siddharth वीवर size is L. सिद्धार्थ साइज इज एल। अरे मुदित भाई का एल ही होगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को फिट नहीं आई रे। मैंने डबल एक्सएल मंगाया था, उसने एल भेज दिया सालों ने। अरे Thank you, Tilak. Thank you so much. Thank you so much. Fred played quite well. Sadiq bhai, we have already discussed everything about it. I am very active. Kunal says, please give it to me. आपके लिए वही है, give it to me. एडी कवानी वाला चैंट मैं गाऊंगा पर्सनली। शाउट आउट मिलता है कुणाल भाई को यहाँ से। जर्सी का क्या करोगे कुणाल भाई? कुणाल भाई शाउट आउट। इंद्रजीत क्या पूछ रहा है भाई? बताओ ना, ये हो सकता है क्या? Why Messi क्या? is so ordinary at 34 and Cristiano Ronaldo was fire at 34? जाने दो रे, अच्छा अभी 2:30 बज यार, रहा है वो रात को। डिबेट नहीं करेंगे इंद्रजीत अभी, सॉरी। Both 2:30 are बज रहा है। sensational players. तो क्या? The two of the greatest एंड footballers to have एंड lived. मेसी इज So नॉट 34। हु सेज मेसी इज 34? 18 महीने का फर्क है रफली। He'll be 35 and a half. He'll be 36 soon. चेक करने दो। मेसी 87 मेसी बॉर्न का है, एज 34 है। 34 है भाई। 34 है। ओके 34 है। माय बैड। सादिक भाई ऑफ कोर्स ये सीधा यूट्यूब चैनल पे जाएगा प्लेलिस्ट में। तो सादिक भाई जनरली टेक्स अ लिटिल टाइम कि जब तक ये अपलोड होता है, वो पता नहीं यूट्यूब टाइम लगाता है। तो प्रोबेबली यू विल फाइंड दिस वीडियो ऑन दिस लिंक, बट वो शायद वीडियोस में रिफ्लेक्ट होने में शायद थोड़ा टाइम ले।
1-2 घंटे टाइप्स, आई डोंट नो, कभी कभी हुआ है, लेट होता है। एनीवे, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठोक के जाओ, और अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके जाओ, सब नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर नहीं पसंद आया हमारा ट्विटर या इंस्टा तो मुदित अरोरा रिपोर्ट कर देना। साथ में लिखना मुदित अरोड़ा फ्रॉम 90 मिनट्स और साथ में टैग करना ग्रैम बेली को। ये सोचो भैंसो कैसे लोग हो यार तुम लोग, इतना एक तो साथ में हो तुम्हारे, इसी मेरी बजाने पे तुले। आप आज से हमारे मगवायर यूएसपी रोहन हो को मुदित मारा भाई। है, समझे नहीं आप? रिवर्स साइकोलॉजी। चलो, चलो गुड नाइट गाइस।